ओके तो आज आम डिस्कस करमा क्लास 12 मैथमेटिक्स रो डिटरमिनेंट्स चैप्टर रो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5b रो सॉल्यूशन ओके सो यू कीप योर बुक and question in front of you and see the solution okay and listen carefully so that you can understand. Question number 1, write the number of solution of the following equation and following system of equation. तो आमे केतेटा सॉल्यूशन अच्छे सिस्टम ऑफ इक्वेशन रे तो हमको फाइंड करबार अच्छे ओके जदि सेथिले हमको क्रैमर्स रूल हमको जानबार ली पड़बा ओके जदि गोटे इक्वेशन टे अच्छे a1x + b1y = k1 और a2x + b2y = k2 अच्छे जदि गोटे दुईटा इक्वेशन दीछे इन तुमको तीनटा भी इक्वेशन दे पारे जदि दुईटा इक्वेशन अच्छे तो आम डेल्टा इक्वल लिखि पारमा a1 b1 a2 b2 माने तार कोफिशिएंट वी कैन राइट द कोफिशिएंट इन द डेल्टा एज यू नो डिटरमिनेंट वैल्यू वी आर राइटिंग ऑल द कोफिशिएंट ओनली सो a1 b1 a2 b2 हे गला हमर डेल्टा वैल्यू हमें मिल गला तापरे आमे क्रैमर्स रूल रे आमे काना करमा डेल x और डेल y दुईटा बाहर करमा जदि तीनटा इक्वेशन थिबा देन वी कैन फाइंड डेल z आल्सो सो डेल x वी कैन राइट इटर जिन तर सॉल्यूशन अछि आमे सॉल्यूशन के आमे नै परमा ई आमे ई कॉलम रे a1 a2 कॉलम रे आमे k1 k2 लिखमा आ b1 b2 टा चेंज नै होय हेन त डेल y कॉलम रे काना हिजबा b1 b2 कॉलम टा चेंज हिजबा आ इनु आमे k1 k2 रो वैल्यू लिखमा जदि तीनटा इक्वेशन अछि बेले आमे काना लिखि पारमा डेल z इक्वल टू जदि तीनटा कॉलम रे अछि जदि हला a1x + b1y + c1z अछि ई टाइप रो इक्वेशन अछि तीनटा फॉर्म रे अछि तो आमे थर्ड कॉलम रे k1 k2 k3 आमे लिखि पारमा डेल z कि डेल x रे आमे k1 k2 k3 जदि तीनटा अछि बेले आ बाकी दुईटा b1 c1 b2 c2 b3 c3 इटा सेम रहबा हला तो आमे सिस्टम ऑफ इक्वेशन केंदारी जानमा केतेटा तार गुटे सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन को आ जासी जदि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हैला आ कैंसी भी डेल x आ डेल y नॉट इक्वल टू 0 हैला जदि डेल्टा इक्वल टू 0 हैला आ कैंसी भी डेल x किंबा डेल y नॉट इक्वल टू 0 हैला देन वी कैन से दैट it has no solution. Just see here, if delta is equal to 0 and at least one out of del x and del y is non-zero, means not equal to 0, then the system has no solution. Likewise, if delta is equal to 0 and del x del y, means we will get the determinant value, we will get the delta value 0 and del x and del y equal to 0, then the system has infinite number of solution. Means we can suppose the determinant, जदि determinant भी 0 हेगला आउ आमे जेन डेल x डेल y डेल z बाहर करू सेटा भी 0 हेगला तो आमे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहि पारमा ओके सो लेट्स सी तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट्स सी x - 2y = 0 इटा गोटे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जदि आ गोटे कंडीशन अछि जदि नंबर ऑफ वेरिएबल ता जदि ग्रेटर हेगला नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन देन आमे काना कहसु इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इनु काना देखमा हेई कंडीशन अछि x - 2y = 0 number of variable 2 x and y are number of variable in this question and number of equation is only one equation is there okay so what we can say if the number of variables is greater than number of equation then it has infinite number of solution okay coming to question number 2 see x - y = 0 and 2x - 2y = 1 this is the given two equation so how we can form the delta equal to आमे कना करमा तार कोफिशिएंट माने डेल्टा इक्वल टू x रो 1 हेगला इनु -y अछि तो -1 आसबा इनु 2 आसबा इनु -2 आसबा सो डेल्टा रो वैल्यू आमे कना लिखमा 1 -1 2 -2 ओके एंड हमर इटा कना डिटरमिनेंट केते हेगला 1 * -2 = -2 -2 * -1 = that is +2 so -2 + 2 = 0 तो हमको कना डेल्टा इक्वल टू 0 हेगला डेल्टा इक्वल टू जेते बेले 0 हे आसी हमको दुईटा कंडीशन मिलसी काना आमे जदी डेल x डेल y डेल z बाहर करम जदी डेल x डेल y डेल z रो कैंसीटा भी जदी नॉट इक्वल टू 0 हेगला तो काना हिजबा नो सॉल्यूशन हिजबा हमको फर्दर करनी पड़े तो देखू डेल x रो वैल्यू काना अछि आमे काना डेल x बेले ए कॉलम रे आमे 0 1 ई 0 1 के आमे इनपुट कोन फर्स्ट कॉलम रे आउ सेकंड कॉलम तो चेंज नै हो जेंदा कि सेंता रहबा हमरिटा तो 0 1 -1 -2 इक्वल टू काना हेगला डेल x तो डिटरमिनेंट बाहर कमा 0 * -2 = 0 और -1 into अमर काना हेसिटा 0 into minus of -1 equal to 0 plus 1 equal to 1
एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमको काना हेगला del इक्वल टू 0 बट del x इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमर काना हेगला सो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन हमर जेन 2 नंबर कंडीशन थिला जेनटा सो दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन 3 नंबर देखो क्वेश्चन काना छै 2x + y = 2 अछि -x - 1/2y = 3 अछि एटा दुईटा इक्वेशन अछि तो आमे काना करमा फर्स्ट आमे डेल बाहर करमा डेल्टा रो वैल्यू बाहर करमा डेल्टा रो वैल्यू काना हिजबा 2 आसला इनु +1 आसला इनु -1 आसला इनु -1/2 ऑल द कोएफिशिएंट वी कैन राइट ऑल द कोएफिशिएंट इन प्लेस ऑफ डेल्टा तो आमे जते बेले वैल्यू बाहर करमा 2 * -1/2 इटा -1 हेउला आउ माइनस ऑफ -1 = +1 हेउला तो -1 + 1 = 0 हेउला -1 + 1 0 हेउला तो आमे जते बेले डेल्टा हे जैसी फिर अगेन टू कंडीशन अराइज ओके दुईटा कंडीशन फिर अराइज हेसी तो हमको काना del x रो वैल्यू बाहर करवा अछि del x रो वैल्यू बाहर करले हम काना करमा जिन तार सॉल्यूशन अछि हम इनु 2 3 हम लिखला ओके आउ ई सेकंड वैल्यूटा चेंज नि हो सेकंड वैल्यूटा जेंदा कि सेंता 2 1 -1/2 तो हम यहां जते बेले डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करमा 2 * -1/2 = -1 आउ 3 * 1 = -3 ओके हम काना रहसीटा this into this minus this into this रहसी तो so -1 * -3 = -2 which is not equal to 0 so according to our condition so the system has no solution okay now coming to question number 4 again 3x + 2y = 1 x + 5y = 6 so we can find now delta equal to what is that all the coefficient we have to write 3 2 3 2 and 1 and 5 so what we have to do now we have to find the determinant 3 * 5 minus 1 * 2 so 3 5s are 15 minus 2 = 13 so 13 is not equal to 0 directly we are getting and it is our first that is first point so the system has one solution we are telling if delta is not equal to 0 then it has one solution delta is not equal to 0 means it has one solution coming to question number b again we are having two equation that is 2x + 3y = -1 okay 2x + 3y = -1 and x - 3y = 4 so what we have to do again we have to find the delta equal to 2 + 3 and x that is 1 and -3 okay so now we have to find the determinant value how we find determinant 2 * -3 that is -6 and -1 * 3 = 3 okay so we are getting -3 * -6 * -3 = -9 which is not equal to 0 means it has one solution okay so the system has one solution because delta is not equal to 0 ebe sorry x + y + z equal to 1 अछि आउ x + y + z again 2 अछि and 2x + 3y + z equal to 0 अछि तो हमको यहां तीनटा इक्वेशन हमर अछि तीनटा इक्वेशन अच्छे बोले सिंपल अगेन एज यूजुअल हमको करबार ले पड़वा डेल रो वैल्यू हमें लिखमा डेल्टा 1 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 2 2 1 2 3 सॉरी 2 3 1 3 अछि नो 3 आसवा 2 3 1 तो हमें डेल्टा रो वैल्यू इटा मिली गला डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट काढमा जेते बेले 3 क्रॉस 3 अछि ऑलरेडी तुमे पढी जो डिटरमिनेंट फर्स्ट री केंदागरी डेल्टा डिटरमिनेंट वैल्यू हमें काढसु सो वेरी इजी डेल्टा इक्वल टू 1 * 1 * 1 -3 * 1 1 so 1 * 1 -3 then ita kana ita plus ita minus ita plus ita minus plus minus then ita plus minus plus okay so like that ita -1 asila inu -1 ita ki jete bile nama e column au e row ke chhadi dama to kana रहला हमको 1 2 1 1 तो 1 * 1 1 au -2 * 1 -2 so 1 * 1 -2 तापर एटा रखमा एटा हे गेला डिटरमिनेंट केंदा बाहर क्वेश्चन आगुरु समझते जानिछ हला सो नो नीड टू कंफ्यूज देन कमिंग टू दिस थर्ड वन ओके थर्ड वन +1 इट इज +1 into +1 बोले ई रो ई कॉलम के छाड़मा तो हमन नु केते 1 * 3 3 आउ 2 * 1 -2 ओके सो हमर पाखे दे डेल्टा रो वैल्यू केते रहला -2 ओके 1 * 1 -3 = -2 into 1 = -2 then 1 - 2 = -1 into -1 = +1 then 3 - 2 = 1 into 1 = 1 okay so हमर पाखे केते रहला -2 + 2 = 0 so delta equal to 0 रहला delta equal to 0 हला बेले हमको देखवा लिए पड़बा del x equal to 0 होची कि नहीं ओके
सो अगेन वी हैव टू जितेटा जहाँ आम सॉल्यूशन थिला सॉल्यूशन पार्ट रे जेन वैल्यू माने थिला सेटा आम एक्स कॉलम रे लिखमा आउ माने वाई और जेड कॉलम सेम रहबा आमर इक्वेशन हिसाब तो 1 2 0 रहला हैला का 1 2 0 रहला आ इनु 1 1 3 1 1 1 तो आम यहाँ बाहर करमा 1 इंटू आम जेन आड़ू भी आम डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करमा ओके याड़ू भी आम we can take from this row, we can take from this column also. So 1 into just see 1 into 1 3 into 1 3 1 into 1 minus 3 then minus 2 into minus 2 आम नहीं पर minus 2 into केते यदि minus 2 इटा के नेला बोले ई रो गला ई कॉलम गला तो 1 into 1 1 3 into 1 3 तो 1 minus 3 so minus 2 into 1 minus 3 तो हमको काना वैल्यू मिलला minus 3 minus 1 minus 3 equal to minus 2 into 1 equal to minus 2 plus minus 2 plus minus 2 into minus 2 equal to plus 4 so 2 minus 2 plus 4 equal to plus 2 is not equal to 0 तो delta equal to 0 हो गला और del x is not equal to 0 होला so the system has no solution okay so question number 7 what is that x plus 4y minus z equal to 0 3x minus 4y minus z equal to 0 and x minus 3y plus z equal to 0 so what is the delta value we have to write 1 4 minus 1 3 minus 4 minus 1 then 1 minus 3 and z that is 1 so what we have to find again we have to find the determinant as it is the constants are given okay as the constants are given we can find the determinant so let's find out so 1 into minus 4 into 1 equal to minus 4 then minus 3 minus 1 equal to plus 3 then minus 4 into here it is minus so minus 4 into that is 3 into 1 3 and 1 into minus 1 that is minus plus 1 then minus 1 into this row and this column we have to cut so what is remaining 3 into minus 3 equal to minus 9 and minus 1 into minus 4 equal to minus 4 so minus plus 4 so now if we are going to calculate we are getting okay 1 into minus 7 minus 4 into 4 minus 1 into minus 5 that is minus 7 minus 16 plus 5 that is minus 23 plus 5 equal to delta equal to we are getting minus 18 that is not equal to 0 if delta is not equal to 0 means it has one solution okay coming to question number 8 x plus y what is the system of equation given x plus y minus z equal to 0 3x minus y minus z equal to 0 x minus 3y plus z equal to 0 so again h constants are coefficient are given we have to find z equal to 1 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 1 3 so we will find the delta value determinant value what is the determinant value 1 into minus 1 minus 3 1 into minus 1 plus minus 3 minus 1 into 3 plus 1 minus 1 into minus 9 plus 1 I hope so all of having idea about how to find the determinant समस्ते जानिसो केंदा determinant बाहर करा जासी okay so our previous number रे में बोते से केंदा determinant बाहर करा जासी so here we are getting okay minus 4 minus 4 and minus plus 8 so delta equal to 0 we are getting delta equal to जेतेले 0 हेसी हमर पाखे दुईटा कंडीशन हेसी आ काना हमें बाहर करसु एबे आप तीनटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अछि हेति लागि हमें तीनटा del x del y del z बाहर करमा आ जेतेले del x बाहर करमा x रे सब 0 0 पुट करमा कारे हमर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रे RHS साइड रे सब 0 0 अछि तो RHS वैल्यू हमें इनु पुट करला x अछि सेतिले x जगह रे पुट करला y अछि हेतिले हमें y वैल्यू रे पुट करला z अछि हेतिले कि z वैल्यू रे पुट करला बाकी सब एलिमेंट माने समान अछि हैला बाकी सब एलिमेंट माने समान अछि तो हमर कना जो डिटरमिनेंट हमें कैंसी भी कॉलम रे बाहर कर परमा तो इटे के हमें जदी नेला हमले डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ हमर रूल भी अछि कैंसी भी कॉलम की रो जदी 0 हो गला तो डिटरमिनेंट वैल्यू कना 0 बाहरसी तो del x 0 हो गला del y 0 हो गला del z 0 हो गला ओके del equal to 0 हो गला del x 0 del y 0 del z 0 so the system has infinite number of solution okay बहुत इजी coming to question number 9 इनु काना अछि हमर a1x plus b1y plus c1z अछि equal to 0 a2x plus b2y plus c2z equal to 0 अछि a3x plus b3y plus c3z equal to 0 अछि तो डेल्टा हमर काना a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हमको अननोन अछि एटा तो हमें 0 ने गेला ओके जदी हमें 0 ने गेला एटा तो del x रो वैल्यू काना हे जबा सेम हमर RHS रे काना अछि हमर RHS रे जे सब 0 अछि तो del x रो वैल्यू काना हेगला 0 0 0 b1 b2 c2 b1 b2 b3 c1 c2 c3
जीरो हो गला एटा हमें जनरल गुटे जनरल फॉर्म एज ए जनरल फॉर्म हमें नौ एटा ओके तो y डेल y रो काना y जगह रे हमें जीरो लिखि दमा a1 और c1 इटा a1 कॉलम c1 कॉलम सेम रहबा डेल z रे a2 b2 हमें रहला डेल z कॉलम रे जीरो रहला तो हमको काना ना 0 0 0 मिलला ओके डेल x इक्वल टू 0 मिलला डेल y इक्वल टू 0 मिलला डेल z इक्वल टू 0 आ हमें एज्यूम करिछु इटा डेल्टा इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू 0 हमें एज्यूम करिछु हैला का करी हमको तर कांस्टेंट रो वैल्यू हमको we don't know the values of constant that's why we have assumed that delta equal to 0 okay if delta so delta equal to 0 del x equal to 0 del y equal to 0 del z equal to 0 so the system has infinite number of solution now coming to question number 2 रे काना दिसे हमको इटा कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट हमको बाहर करवार अछि तो सेटा हमको del रो वैल्यू बाहर करवार अछि तो del रो वैल्यू बाहर करवा ले हमें काना करवा ले पड़बा हमको काना इक्वेशन दिछि a माइनस b x प्लस b माइनस c y प्लस c माइनस a z b माइनस c x c माइनस a y a माइनस b z c माइनस a x a माइनस b y b माइनस c z इक्वल टू 1 आडे 0 0 दिछि तो हमें काना करमा एबे हमें डिटरमिनेंट फॉर्म रे लिखमा डेल्टा इक्वल टू एडा a माइनस b b माइनस c c माइनस a सब थेर कोएफिशिएंट माने लिखि देला तापरे तमे जानि छ फर्स्ट हमें काना मैट्रिक्स रे भी हमें पढिछु काना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओके रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें ट्रांसफॉर्म करी करी हमें माने इजी बने परमा ओके सो मुई काना कोली एटा ट्रांसफॉर्म कोली कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 माने कॉलम 1 ई कॉलम टा मुई काना करम ई कॉलम के ई कॉलम संगे भी ऐड करम ई कॉलम संगे तीनटा के मुई ऐड करी करी कॉलम 1 रे लिखम ओके सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a सब वैल्यू पहला हेंता इनो भी हेटा पहला इनो भी सब तार माने सबुटा के ऐड करा है b माइनस c c माइनस a माइनस b सब आइनो c माइनस a माइनस b माइनस c आउ ई कॉलम 2 और कॉलम 3 टा सेम रहला का करी हमें गुटे कॉलम की खाली चेंज करिछु आउ ई दुई कॉलम सेम अछि ओके सो हमको काना मिलला इनु 0 0 0 एना हम जेते बेले हम एटा करमा हमको काना 0 0 0 मिलला a माइनस प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल एंड सब इटा 0 0 0 मिला तो हमको काना डेल रो वैल्यू 0 मिलियोला तो हमें काना करमा यहां डेल x रो वैल्यू नमा डेल x रो हमको काना अछि हमें सॉल्यूशन पार्ट रे हमर आरएचएस पार्ट रे 0 0 1 थिला तो 0 0 1 नै छु आ बाकी दुटा कॉलम सेम अछि तो हमको काना मिलला एटा ओके 1 इनटू इटा की डायरेक्ट नै गला इटा हमें जिन छु हमें कैंसी भी कॉलम की कैंसी भी रो रो हमें मल्टीप्लाई करि परमा तो प्लस माइनस प्लस तो 1 इनटू हमें जदी इटा के नेला बेलने इतर हला इतर माइनर माने कान हे जे 1 रो माइनर माने ई चारटा हे जे ई चारटा माइनर हे जे तो b माइनस c इनटू c माइनस a इनटू a माइनस b ओके सो वी कैन मल्टीप्लाई नाउ b माइनस c इनटू a माइनस b माइनस c माइनस a इनटू c माइनस a दैट इज वी आर गेटिंग b माइनस c इनटू a माइनस b माइनस c माइनस a स्क्वायर तो हमको इनु काना कंडीशन पहला डेल इक्वल टू 0 हो गला बट डेल x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गला तो हमें काना पहला नो सॉल्यूशन ओके तो हमको काना मिला सो वी हैव डेल इक्वल टू 0 एंड डेल x इज नॉट इक्वल टू 0 सो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हमको काना मिला इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन माने इनकंसिस्टेंट ओके हमको काना इनो देखो कंसिस्टेंट मींस यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मींस यूनिक सॉल्यूशन की हमें इनफिनाइट सॉल्यूशन हमें कहि परमा हाउ इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन सब बोले मन रखो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट रे दुईटा है यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन ओके ओके सो एबे क्वेश्चन नंबर 3 रे इक्वेशन देछे तीनटा इक्वेशन देछे आउ हमको केतेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन अछि हमको बाहर करवार अछि ओके सो x plus 2y plus 3z equal to 4 2x plus 3y plus 4z equal to 5 3x plus 4y plus 5z equal to 6 तीनटा इक्वेशन दिछि तो केतेटा नंबर ऑफ इक्वेशन हमको बाहर करवा छै बोले हमें काना बाहर करवा पहला हमें डेल बाहर करमा तो हमर काना हमको पहला डेल बाहर करवा छै जदी डेल रो वैल्यू 0 हो गला तो हमको डेल x डेल y डेल z बाहर करवा छै जदी डेल x इज नॉट इक्वल टू डेल जदी डेल इज नॉट इक्वल टू 0 होला बेले काना यूनिक सॉल्यूशन है और जदी डेल
इक्वल टू जीरो हो गला आउ कैनसी भी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड रो वैल्यू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है बोले आम कण पाइमा आम से नो सॉल्यूशन पाइमा आ जदि सब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सब जीरो हो गला बोले इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पाइमा ठीक अच्छे। तो आमको डेल रो वैल्यू टा कण 1 2 3 मिलला 1 2 3 2 3 4 3 4 5 तो मिलगला। तो अब एबे आम यहाँ ये तार वैल्यू मैंने पुट करी डिटर्मिनेंट वैल्यू आम बाहर करमा 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू एटा जिते सब बाहर करमा तो डेल रो वैल्यू आमको जीरो मिलला। डेल रो वैल्यू आमको जीरो मिलगला बेले आमको यहाँ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बाहर करवार अच्छे आमको डेल एक्स बाहर करवा अच्छे डेल एक्स आम बाहर करला डेल एक्स रे काण आम सॉल्यूशन पार्ट रो जेन अच्छे 4 5 6 सेटा इनु पकेदेमा एबे ओके। सो आमर काण होगला 4 5 6 इटा ए माने एक्स कॉलम रे होगला आउ वाई आउ जेड कॉलम सेम रहला। तो डेल एक्स रो वैल्यू भी आम 4 इंटू 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू केते हला माइनस 2 इंटू इटा 5 इंटू 5 25 6 इंटू 4 24 सो 25 माइनस 24 प्लस 3 इंटू इटा 3 कॉलम है बोले कॉलम को छाड़ी करी आमर पाखे काण रहला 5 इंटू 4 20 माइनस 6 इंटू 3 18 तो आमर इनु भी वैल्यू हमको जीरो मिलला। और डेल एक्स रो वैल्यू जीरो होगला तापर डेल वाई रो वैल्यू डेल वाई इजिन 4 5 6 टा मिडिल रे रहबा 4 5 6 टा मिडिल रे रहबा आउ एक्स कॉलम और वाई जेड कॉलम सेम रहबा। तो हंदा डेल वाई रो वैल्यू हमें पुट करला हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू बाहर करला तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हंदा तो अगेन हमको कणा मिला जीरो मिलला। तो डेल वाई इक्वल टू जीरो होगला अगेन हमको कणा फिर 4 5 6 की आम जेड कॉलम रे रखमा आउ एक्स और वाई कॉलम सेम रहबा जेनटा हमर इक्वेशन रे सेटा रहबा। तो डेल जेड कॉलम बेटा हमर 1 इंटू 6 3 जा 18 4 5 जा 20 तापर माइनस 2 12 माइनस 15 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 9 तो हमको फिर डेल जेड इक्वल टू जीरो मिलला। तो हैंस हमको काଣା मिलला टोटल डेल जेड इक्वल टू जीरो। सो डेल इक्वल टू जीरो मिलला हमको डेल एक्स इक्वल टू जीरो मिलला डेल वाई इक्वल टू जीरो मिलला डेल जेड इक्वल टू जीरो मिलला। सो द सिस्टम हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमर जिते सब जीरो हो आसी हमको काଣା सिस्टम रे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें पाई परमा। एबे क्वेश्चन नंबर 3 रो सेकंड क्वेश्चन ने हमको गोटे इक्वेशन रे दिछे 2x + 5y + 8z = 0 x + 4y + 7z = 0 6x + 9y - lambda z = 0 दिछे। हमको काଣା दिछे गिवन दैट इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बेले काଣା हमको डेल्टा रो वैल्यू 0 दे दिछे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बेले काଣା हमें डेल्टा रो वैल्यू 0 और ट्रिवियल सॉल्यूशन बेले डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बेले डेल्टा इक्वल टू 0 दिछे बेले हमको काଣା क्वेश्चन रे कहिছে हमको लैम्बडा रो वैल्यू फाइंड करो আছে वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। सो व्हाट डू हैव टू डू स्टार्टिंग रे एज यूजुअल हमको काଣା करबार আছে डेल्टा रो वैल्यू डेल्टा हमको बाहर करबार আছে डेल्टा काଣା আছে हमको 2 5 8 हमर इटा काଣା कोएफिशिएंट माने सब नै जमा सब कोएफिशिएंट माने नै जमा 2 5 8 1 4 7 6 9 माइनस लैम्बडा। तो हमें कोएफिशिएंट माने सब नै गला 2 5 8 1 4 7 6 9 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 नमा कारे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है ओके। सो एबे हमको काଣା मिलला 2 into 4 into minus lambda that is minus 4 lambda minus 9 into 7 equal to 63 तापर minus 5 into minus lambda into किते होला minus 1 into minus lambda into minus 6 into 7 42 plus 8 into 9 minus 24। तो हमको जेन एज यूजुअल हमें फार्मूला करसु डिटरमिनेंट रो वैल्यू बाहर करबार लगी हेंदा वैल्यू बाहर करमा तापर टिके सॉल्व करमा 2 into minus 4 lambda equal to minus 8 lambda 2 into minus 63 equal to minus 126 minus minus plus 5 into lambda 5 lambda minus minus plus 210 5 into 42 equal to 210 plus 72 8 9 जा 72 minus 8 into 24 equal to 192 तब 0 होइला। तबे सब लैम्बडा टर्म दुईटा लैम्बडा टर्म अछि आ बाकीटा कांस्टेंट टर्म अछि तो गुटे आड़ के ने गेला तो minus 8 lambda plus 5 lambda minus 126 minus 192 210 72 एटा के चलते बोले minus 8 lambda by 5 lambda minus 8 lambda plus 5 lambda equal to minus 3 lambda minus 126 minus 192 minus minus टर्म के में पाकिया नहीं छे आउ प्लस प्लस टर्म के में पाकिया नहीं छे तापर हमको काना मिलला 3 lambda minus 318 हमें टे ऐड करले 318 प्लस एटा के ऐड करले 282 इक्वल टू 0 तापर एटा के जेते बेले 318 प्लस 282 माइनस एटा करला माइनस 36 मिलला
तो 3 लैम्बडा इक्वल टू 36 माइनस 36 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल टू 36 इटा ऐड के गले प्लस होगा लैम्बडा इक्वल टू कौन है माइनस माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 3 एटा तल के पड़े तो लैम्बडा रो वैल्यू 12 हो गला जेने कि हमर आंसर है रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 माने 3 रो थर्ड बिट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3 दीछे आउ 3x प्लस 2y प्लस kz इक्वल टू 4 दीछे हमको k रो वैल्यू हमको बाहर करवार अछि। ओके k रो वैल्यू हमको बाहर करवार अछि तो यही समय हम डेल इक्वल टू हमें नहीं गला 1 1 1 k रो वैल्यू k इज इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू 0 हमको बाहर करवार अछि। तो हमको एटा अछि हमर पाखे एटा सॉल्यूशन अछि तो एटा कना हमर डिटरमिनेंट हमको पहला में डिटरमिनेंट देखमा डिटरमिनेंट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें कना करमा डेल्टा पहला डिटरमिनेंट बाहर करमा 1 1 1 2 1 माइनस 1 3 2 माइनस 3 2 k अछि तो डेल्टा रो वैल्यू टा 1 1 एटा हेगला तो एटा नॉट इक्वल टू k तो डेल्टा रो हमें जदी वैल्यू बाहर करला 1 into k plus 2 1 into k और माइनस 2 into माइनस 2 हेगला माइनस माइनस प्लस 2 हेगला 1 into k plus 2 माइनस 1 into 2k plus 3 माइनस 1 into 2k 3 माइनस 3 हेगला प्लस आसीला प्लस 3 प्लस 1 into 4 minus 3 ओके प्लस 1 into 4 minus 3 is not equal to 0 not equal to 0 बेले हम कना बाहर करमा k plus 2 इटा जेते ब्रैकेट खोल देमा k plus 2 minus 2k minus 3 plus 1 not equal to 0 equal to k minus 2k plus 3 plus 3 minus 3 cancel so what we are getting k minus 2k equal to minus k is not equal to 0 so k is not equal to 0 जेने कि हमर ऑप्शन रे दिछि 3 बिट 3 हमर कना एटा मल्टीपल चॉइस टाइप दिछि आ हमर ऑप्शन रे k is not equal to 0 हमर आंसर। ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन रे कना दिछि x plus y plus z equal to 6 दीछे x plus 2y plus 3z equal to 10 दीछे x plus 2y plus mz equal to n so what we have to do we have to find the value of n as well as we have to find the value of n so what we have to do and it is given that we can take delta equal to 0 okay the value of delta equal to 0 it is given so what we have to do delta equal to we have to write first all of the coefficient that is 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 m equal to 0 if we are taking now after solving this one we are going to get the value of m so just see 1 into 2m minus 6 minus 1 into okay minus 1 this column and this column and this row will left so 1 1 3m so 1 into m and 1 into 3 3 so m minus 3 plus then plus that is 1 it is plus 1 so we'll keep this one 1 2 1 2 so 2 minus 2 equal to 0 okay I hope so all of you know how to find out the determinant so minus sorry 2m minus 6 minus m minus minus plus m equal to 0 because this is 2 minus 2 equal to 0 so we are getting 2m minus 6 plus m plus 3 equal to 0 and 2m minus m equal to m and minus 6 plus 3 equal to minus 3 equal to 0 so m equal to 3 now we are getting m equal to 3 now we have to find what is the value of n as in the question it is given it is for infinite solution as in the question it is given for infinite solution what we can do infinite solution mean del equal to 0 del x equal to 0 del y equal to 0 del z equal to 0 so now del x equal to we can write all the solution part we can write 6 10 and n in x we can write 6 10 and all means y column and z column will be remain same 1 2 2 1 3 3 so what we have to do now we have to find again the determinant del x equal to 6 into 2 into 3 6 2 into 3 6 6 into 6 minus 6 then minus 1 into 6 into 2 3 is 6 and 2 3 is 6 to 6 into 6 minus 6 then minus 1 into 3n minus 1 into okay minus 1 into 10 into 3 30 and 3 into n 3n so we can write minus 1 into as usual 30 minus 3n we can write or 3n minus 30 also we can write plus 1 into plus 1 into 20 minus 2n okay so what we have to do now we have to simplify this one so after simplification we are getting minus 3n plus 30 plus 20 minus 2n equal to 0 okay so then after that minus 3n minus 2n equal to minus 5n plus 50 equal to 0 okay minus 5n plus 50 equal to 0 and minus 5n equal to minus 50 okay
then n equal to 10. So we are getting the value m equal to 3 and n equal to 10. Okay, then coming to next question, the system of equation it is given. Okay, 2x minus y equal to 2x minus y plus z equal to 0. Okay, x minus 2y plus z equal to 0, lambda x minus y plus 2z equal to 0 has infinite number of solution. It is given that this equation, this system of equation has infinite number of solution, means that delta equal to 0, delta x equal to 0, delta y equal to 0, delta z equal to 0, and we have to find the value of lambda. Okay, so according to the question, delta equal to 2, after taking the coefficient we can write 2 minus 1 1, 1 minus 2 1, lambda minus 1 2 equal to 0, because it is infinitely many solution. It is given that the system of equation has infinitely many solution. Okay, so what we can do now, 2 into minus 2 to the minus 4. Okay, minus 1 into 1 equal to minus 1, minus minus plus 1, then minus into minus 1, it is minus 1 given, that's why it minus into minus 1 into 2 minus lambda. See, this one we are taking, so minus 1 into 2 minus 2, minus 1 into 1 into 2 2, and lambda into 1, that is minus lambda, plus 1 we are taking this one, so this will cancel. What is remaining? This 2, so 1 into 1 minus 1 and minus 2, that will be plus 2 lambda equal to 0. After solving this we are getting minus 6 plus 2 minus lambda minus 1 plus 2 lambda equal to 0. Okay, so now minus 6 minus 1 plus 2, after this we are getting minus 7 plus 2 equal to minus 5, plus minus lambda plus 2 lambda equal to plus lambda, so lambda equal to we are getting 5 will come to this side, plus 5, lambda equal to plus 5 we are getting. Okay, now coming to another situation we are having. Here it is, I have told you this type of equation, if it is giving, then it is infinitely many solution. a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0. So it is a general form of the system of equation, okay. So with it is given that already given that a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 equal to 0. Okay, means delta is 0. Delta equal to 0 means then it has infinite number of solution. Okay, if delta equal to 0 and the solutions are RHS side is 0, then we can say that it is infinite number of solutions. So del equal to 0, del x equal to 0, del. Okay, so we can say in 4 options, how 4 options are there, and from the 4 options the correct answer is more than 2 solution, means this question having more than 2 solution, and that is the answer. Coming to question number 4, it is given that can the inverse of the following matrix be found, means can we found the inverse of the matrix. So what we have to do, means what is the general concept we need, if the determinants exist or a determinant of a is not equal to 0, if the determinant of a is not equal to 0, then we can say that a inverse exists, means we can find the inverse. If a determinant of a equal to 0, then what we can, means it is undefined. That's why if determinant of a is not equal to 0, then we can say that a inverse is exists. So for this question what we have to do, we have to find all the determinant of the matrix. If determinant is not equal to 0, then we can say that, okay, if determinant is 0, then we can say that it is if determinant is not equal to 0, then we can find the matrix. Okay, so see here, first question, see 0 0 0 0 it is given, so determinant of a equal to 0, that's why we can't find the inverse. Very easy. If a equal to 0, then we can't find, and if a is not equal to 0, then we can find the inverse. Very easy. So now coming to this question, 2 1 2 3 4, so a determinant of a equal to 4 minus 6, 1 into 4 4 minus 3 to just 6, that is minus 2, so we can find the inverse. Then coming to 3, a equal to, this is given, okay, a equal to 1 1 1 1 it is given, so a determinant of a equal to 1 minus 1 equal to 0, so a inverse does not exist. Very simple. Then a equal to 1 2 2 4 it is given,
determinant of A equal to 1 into 4, 4, 2 to the 4, 4 minus 4 equal to 0. A inverse does not exist. We can't find the inverse of A. Like that here in this question 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So A determinant of A equal to 1 into 0 minus 0, 1 into 0 minus 0 into 1 into 1 into 1 equal to 1. Okay, then 0 into 0, 1 into 1 1 and 0 into 0 0, and another thing we can write directly, we can write 0. So determinant of A equal to 1, so A inverse exists. Very simple. If A determinant of A is not equal to 0, then we can find the inverse, otherwise we can't find the inverse. Coming to the question number 5, find the inverse of the following. We have to find the inverse of the following. Okay, question number 1, if A equal to 1 0 0 1, how we have to find the inverse? Okay, there is a formula for inverse. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. Okay, adjoint of A divided by determinant of. So first we have to find determinant of A. Determinant of A equal to 1. This is because 1 into 1 equal to 1. So determinant of A equal to 1. So A inverse exists. Now we have to find adjoint of A. How we are finding adjoint of A? For finding adjoint of A, first we have to find the cofactors. Okay, first we have to find cofactors. So just see how we are finding the cofactors. Okay, A11, what is the formula? Minus 1 to the power 1 plus 1 means we are adding this one. 1 1 means 1 plus 1, 1 2 means 1 plus 2. Okay, 2 1 means 2 plus 1, like that. And this will be minus 1, it will be common. Minus 1 will come. And see, A11 means what we are writing? A11 means, okay, A11 means what is that? 1 1, what is the 1 1 position? This is 1 1 position. So except this column and this row, what is remaining? That is A11. So just we will cut this one and this one, 1 is remaining. So 1 it is. A12, what is that? A12 means this is A12 position, means we will cut this column, this row and this column, and what is remaining? 0 is remaining. We are writing 0 here. A21, A21 means what we will write? Minus 1 to the power 2 plus 1 into 2 1 means this is A21, 2 1, this is 2 1 position. So except this one and this one, this row, what is left? 0 is left. So we are writing 0 here. Okay, and A22 means what we are writing? This is A22. Okay, like that. A22 means we are writing A22 position. This is 22 position. Okay, this is this row and this column will cut. So what is remaining? 1 is remaining. So that's why we are writing 1 here. Okay, now what we have to do? A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into 1, that is 1. A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 equal to minus 1 to the power minus 1 into 0 equal to 0. Here also 0 we are getting, and A22, that is positive 1, we are getting 1. So now we adjoint of A means there is a sequence to write adjoint of A. How we are writing adjoint of A? A11, A12. All of you remember this one. A11, A12, A21, A22. Like this we are writing adjoint of A. Now we have to just put the value that A11 equal to 1, A12 equal to 0, A21 equal to 0 and 1. Okay, after that what you have to do? Okay, we got adjoint of A. Now formula, our formula is A inverse equal to, what is that? Adjoint of A divided by determinant of A. So 1 by 1 by determinant of A equal to 1, 1 by 1 into 1 0 0 1. So this is A inverse equal to 1 0 0 1. Now coming to question number 2, A equal to 2 minus 1 1 3. Again in same style, A inverse equal to adjoint of A divided by A determinant of A. Now we have to find first determinant of A. Determinant of A equal to 2 3 is 6 into 1 into minus 1 equal to minus 1, and 6 minus minus 1 equal to 6 plus 1 equal to 7. All of you know how we are finding determinant. So A determinant of A equal to 7. So A inverse exists. Now what we have to do? Exactly we have to find with the previous method. Okay, we have to find with the previous method. A11 means this is 1 1 position, means we have to cut this one and this one, and 3 is left. So A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into 3, that is minus 1 to the power 1 plus 1 into 3 equal to 3. Likewise A12 position, this is 1 2 position, 1 2, this is 1 2 position, means this one and this one will cut, this one is remaining. So what we will write here?
1 we will write. 1 2 means 1 you will write here. Minus 1 to the power 1 plus 2. 1 2 1 plus 2 minus 1 to the power 1 plus 2 into 1 equal to minus 1. Okay, then 2 1 position. A 2 1 means this is 2 1. Okay, this is 2 1 position means this column and this row will cut. What is remaining? Minus 1. So we will write minus 1 here. Okay, 2 1 position will write minus 1. Okay, so A21 equal to minus 1 to the power 2 plus 1 into minus 1 equal to, that is 1 we are getting. A22 position means this is A22 position. Okay, this is 22 position means this one we will cut. 2 is remaining, so we will write A22 equal to minus 1 to the power 2 plus 2 into 2 we are writing. This 2 here. 22 position means 2 we are writing. So we are writing minus 1 to the power 4, that is plus it is coming, plus 2, that is 2. So adjoint of A now we are writing as usual A11, A12, A21, A22. Okay, it is the transpose of the position, transpose position we are telling. So just put the value, we are getting 3 1 minus 1 2. Now adjoint of A inverse equal to adjoint of A by determinant of A. So that is determinant of A, that is 1 by 7, and adjoint of A 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2. So this is the required A inverse. Now coming to A, again question number 3, A equal to 4 minus 2 3 1. So what you have to do? A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. Again same formula. So we have to find determinant of A equal to 4 plus 6 equal to 10 we are getting. So A inverse is exist. If A inverse is exist means what you have to do now? A11 means this is A11 position, means what we have to do? 1 1 position means this one cut, 1 is remaining, so 1 we are writing. A12 position, 1 2 means what we are writing? This is 1 2 1 2, this is 1 2 position means we will cut this one, 3 is remaining, so 3 we are writing here. A21 position, 2 1 means this is 2 1, so we will cut this one, this is remaining, so minus 2. Okay, so and A22 position, 22 position means this is 2 2, so this one will cut, this one will cut, remaining this one, so 4 we are writing 4 here. So now A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into 1 equal to 1. A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into 3 equal to minus 3. A21 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into minus 2 equal to plus 2, because it is we are getting here it is getting 3. Okay, here we are getting, this will be 2, this will be 2, so 2 plus 1 equal to 3, minus 1 to the power 3 equal to minus 1, minus 1 into minus 2 equal to plus 2, and like that A22 equal to we are getting minus 1 to the power 1 plus 1 equal to 4, so we are getting 4. So we are getting now adjoint of A equal to 1, no, like that 1 3, there is a sequence also we can write adjoint, just see 1 minus 3 2 4, 1 3 2 4, like that 1 3 2 4 1 3 2 4, like this we can write. So now A inverse equal to 1 by determinant 1 by 10, as we got earlier, 1 by 10 into 1 minus 3. Okay, 1 minus 3 2 4. Okay, coming to IV number, what is given? A equal to 2513. Okay, 2513 given, so what we have to do? We have to find A inverse. Likewise, formula of A inverse equal to adjoint of A divided by A determinant of A. Okay, divided by determinant of A. Now we have to find determinant of A. Determinant of A equal to 2 into 3, that is 6, minus 1 into 5 5. So 6 minus 5 equal to 1. So A inverse exists. Okay, because A determinant of A is not equal to 0, that's why A inverse exists. Now what you have to do? We have to find the cofactors. This is known as cofactors. This is known as cofactors. So A11 equal to, in their position, minus 1 to the power 1 plus 1 into 3, that is 3. A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 into 1 equal to minus 1. A21 equal to minus 1 to the power 2 plus 1 equal to 5. You do by yourself. If mistake is there, then you just check the answer so that you can know. A21 equal to minus 1 to the power 2 plus 1 into 5 equal to minus 5, because minus 1 to the power 2 plus 1, that is minus 1 to the power 3 into 5 equal to minus 5. A22 equal to minus 1 to the power 2 plus 2 into 2 equal to 2. All of you know how we are getting this one. This is the position we are getting by the above matrix we are getting. So now adjoint of A equal to what we are getting? 3 minus 1 minus 5 2, 3 minus 1 minus 5 2, 3 minus 1 minus 5 2. Sequentially just write down so that you can understand. Now A inverse equal to we are getting 1 by 1,
determinant we are getting 1, so 1 by 1 into 1 by determinant of A into adjoint of A. This is adjoint of A. 3 into minus 5, 3 minus 5 minus 1 2. So we are getting A inverse equal to 3 minus 5 minus 1 2. That is the answer. Now again question number 5. A equal to 1 0 2 minus 3 it is given. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. A determinant of A equal to minus 3 minus 0 equal to minus 3. So A inverse exists. Now what you have to do? We have to find the position. We have to find the position of this position we have to find from here. Okay, all of you understand how we are finding the position. Okay, so just A11 equal to minus 1 to the power 1 in plus 1 minus 3. A11 means this is 1 1 position, so we will cut this one and this one. What is remaining? Minus 3 remaining. That's how we are writing minus 3. Likewise, we will write all the values. So A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1, that is minus 3. A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 equal to, that is minus 2. And likewise we are getting all the values. So adjoint of A equal to now minus 3 0 C, minus 3 minus 2 0 1, minus 3 minus 2 0 1. So A inverse equal to minus 1 by minus 3, that is we are getting here 1 by minus 3, that is determinant value 1 by minus 3 into minus 3 0 minus 2 plus 1. Coming to question number 6. A equal to, very easy question. This is 1 0 0 minus 1. Okay, so just see A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. Now determinant of A equal to minus 1 minus 0 equal to minus 1. So determinant A inverse is exist. Now what you have to do? A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 minus 1, that is equal to minus 1. Okay, A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 means we are adding this one, 1 plus 2 equal to, okay, we are adding this one, so we are getting 0. So A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 into 0 equal to 0. A21 equal to minus 1 to the power 2 1 into 0 equal to 0. These are the position we are getting. Okay, A22 equal to minus 1 to the power 2 plus 2 into 1 equal to 1. So now adjoint of A we are getting, that is minus 1 into 0 0 1. Okay, so A inverse equal to 1 by determinant of A, that is minus 1 by minus 1, and here it is adjoint of A. So by multiplying we are getting 1 0 0 minus 1, because minus 1 will multiply with this one plus 1, and minus 1 will multiply with this one, that is minus 1. Okay, now coming to a question number 7, that is A equal to I minus I. Okay, so A inverse equal to adjoint of A by determinant of A. Now what you have to do? A determinant of A equal to, what is that? I into I square into minus I into minus I, that is minus I square. So minus plus I square. So I square plus I square equal to 2I square. I square, this is known as iota, and iota, the value of iota equal to root over of minus 1. Okay, so 2I square equal to 2 into minus 1 we can say, and determinant we are getting minus 2. Now determinant of A equal to minus 2, so A inverse exists. Now what do you have to find? We have to find the position. Okay, cofactors we have to find. A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into I. A11 means this is A11 position, means this one we can cut, this one we can write, so I. Now 1 2 position, 1 2 position means this is 1 2 position, means this one will cut, this one we can write I here. So A12 equal to minus 1 into, okay, 1 into 2, 1 plus 2, that is A12 equal to minus 1 to the power 1 plus 2 into I, that is minus I. Then A21 equal to, likewise we can find minus 1 to the power 2 plus 1, that is minus I equal to I. And A22 into equal to minus 1 to the power 2 plus 2 equal to I, that is I. How we are getting here plus I? Because minus 1 to the power 3, that is minus plus. Now adjoint of A, I have told you how we are getting I minus I minus I, like that. Now A inverse equal to 1 by determinant of A. Determinant of A we are getting minus 2, 1 by minus 2 into I minus I. That is the answer. Coming to question number 8 and the last question of question number 5, that is A equal to x minus x square it is given. So we have to find A inverse. So let's see, A inverse equal to adjoint of A by determinant of A. Now determinant of A equal to x cube plus x square. So just see, x into x square equal to x cube,
and minus is there, minus minus plus, and x into x, x square. So A inverse exists. Now we have to find the position. A11 means this is A11. So what we have to do? This row and this column we have to cut. So what is remaining? X square. So A11 equal to x square position. We are getting x square. So A11 equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into x square. That is x square. Now A12 position means this is 1 2. So we'll cut this one and this one. So what is remaining? X. So we are writing minus 1 to the power 1 plus 2 into x. That is minus 1 to the power 3. That is minus x we are writing. Then coming to similarly A21 position, we are getting minus x. So minus 1 into 2 plus 1, that is x we are getting. And A22 equal to we are getting x. So plus x we are getting. Now adjoint of A equal to we are getting x square minus x, x square minus x, x. So means A11, A12, A21, A22, like that it is. Okay. So A inverse equal to 1 by x cube plus x square into, that is 1 by determinant of A. Determinant we got, that is x cube plus x square. So 1 by determinant of A into adjoint of A. So this is the answer of bid number 8, inverse. Okay. So if we are understanding one or two question, what is the procedure to find the A inverse, then we can easily find the A inverse. First you have to check whether A inverse is exist or not. Then we have to write the cofactors properly. A11, A12, A21, A22 means we have to find the correct position and exact position. Then we have to put the formula. Then we have to find the adjoint of A. Okay. After finding adjoint of A, you can find the inverse of A. Okay. Thank you.